Assalamu alaikum everyone, this is Usama Rizvi and welcome to another episode of the WTI Talks. आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट है. टुडे वी आर गोइंग टू टारगेट द यूथ ऑफ आवर कंट्री. आपको पता है कि पाकिस्तान हैज़ द सेकंड हाईएस्ट यूथ बल्ज इन द वर्ल्ड. हमारे हर साल कुछ 3 से 4 मिलियन जो बच्चे हैं वो 18 साल के होते हैं. इनको यूटिलाइज कैसे करना है, इनकी एनर्जी को, इनके टैलेंट को चैनलाइज कैसे करना है, आज हम इन चीज़ों पे बात करेंगे. और for this purpose, we have invited Mr. Hassan Hanif Khan. He's an educationist. He is the director of Naseem Khan Consultancy, which is an education consultancy जो कि UK में deal करते हैं specifically. और ये पिछले कार्डिफ के इन कंट्री रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं. एजुकेशन में और बच्चों से डील करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं. तो आज इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे यूथ में और आगे गाइडेंस के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं वो. वेलकम टू द शो सर. हसन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ वो बिगर पिक्चर से मैं स्टार्ट करता हूँ, हमेशा कोशिश होती है. तो आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हम पढ़ते हैं, बल्कि ये बड़ा एस्टैब्लिश पॉइंट है कि प्रॉब्ली सेकंड हाईएस्ट यूथ बल्ज है पाकिस्तान में. हर साल एक स्टैट के मुताबिक आई वाज रीडिंग के अबाउट 4 मिलियन किड्स दे टर्न 18 ईयर्स ऑफ एज. अब नेचुरली दिस कैन बी एन एसेट बट ऑल्सो अ लाइबिलिटी अगर आप इसको प्रॉपरली चैनलाइज ना करें. तो आपका जो थ्रू मोर देन अ डेकेड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका कंसल्टेंसी में, टीचिंग विद, इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आपने कौन से कोई मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स देखे हैं जो कि आपको लगता है हमारे यूथ में एग्जिस्ट करते हैं? So, number one, thank you for having me. It's an absolute honor to be with you. Now, what I would say is that it's not an opportunity. It is definitely an opportunity when it comes to the population we have. We should never look at it as a problem or a liability. The moment you start looking at it like that, it becomes an issue. And all the work that we do, if it's policymakers, if it's educators, as parents, as mentors, should be targeted towards those youngsters. Okay. Now, when it comes to the problems, I predominantly worked with students who are going to the UK for their undergraduate studies, foundations, masters. So I sort of work with students who are either exceptional and have gone on with scholarships, or students who have a slight amount of finances. Okay. So it's a much smaller chunk of our entire population. So I can talk about the problems that I see with them. Gee. And I think the biggest problem is not the students themselves or the youngsters, but the mentors who are around them, and then or the educators who are guiding them, who are working with them. Bilkul. And I think the problem stems from that. Bilkul. Now, unfortunately, this is the world that we live in. And what I feel right now is a time where students do need to empower themselves. So when it comes to the problems, I feel that students aren't committed. I feel that they aren't problem solvers. They waste their time. They're not organized. I feel that they don't, number one, follow their goals, their passions, and they don't really reach for them. So I feel that they've been bubbled up and they've been given too much comfort to work with. So that's a big issue that I have right now with youngsters. And I think they have a lot of opportunities in front of them. And especially being in Pakistan and living in Pakistan, and what they need to do is they need to reach out and actually look at what opportunities are there and how to take them step by step. As for institutions, I think a big problem is that they don't invest in their students the way that they should. They need to bring on exceptional mentors. So the problems are very vast. Now, our students are not doers. Our youngsters are not youngsters who are looking to solve problems. They're stepping away. And I feel that what they do is whenever they're faced with something, they would rather step away and have that solved for them, or have finances thrown into that. Instead of them actually taking on those as opportunities. तो हसन भाई, आपने कहा कि आप ज़रा हर तरह के स्टूडेंट से डील करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आप मतलब उनमें भी देखते हैं जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, और जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है उनकी जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ मैं भी, क्या वो सेम है? Not at all. So those ones who are financially well off,
I think they're disabled. Okay. So obviously not physically, not mentally, but the disability is that they're not been given the opportunities to solve their own problems. Everything has been done from them from each and every step. I mean, the smallest thing in the world for you to get up and make your bed, the smallest thing for you to actually make your breakfast, for you to actually utilize the institution that you have been put into. Now, X amount has been paid towards your tuition fee within the schools. You should not need extra tuitions. You should be able to fight, and you should be organized enough that you need to take out enough knowledge from the institution and the facilities that you have instead of going to extra tuitions. So I think that they have been put in a place where everything is being done for them and they're made as comfortable as possible. Okay. And I find that as a huge issue. Okay. अच्छा हसन भाई, इसके साथ मैं मतलब इस पे और भी बात करना चाहूँगा आगे जाके, लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे दूसरा वो ये है कि रिसेंटली एक और ट्रेंड भी आया है कि काफ़ी पाकिस्तानीज कंट्री को मतलब लीविंग द कंट्री और बाहर सेटल होने जा रहे हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फॉर एम्प्लॉयमेंट. लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था कहीं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, कि ब्रिटिश काउंसिल में जो आइल्स देते हैं हम, उसमें पाकिस्तानियों की पता नहीं 2 से 3 गुना ज़्यादा उन्होंने ना कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है. रजिस्टर करते हैं उसके लिए. तो पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए भी, मास्टर्स के लिए, ग्रेजुएशन के लिए भी लोग काफ़ी बाहर जा रहे हैं. तो इस ट्रेंड को आपने विटनेस किया होगा. तो इसके अंदर रहते हुए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जो ऑडियंस है उनको बता सकते हैं, मे बी यूके स्पेसिफिक, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आउट देयर दैट दे कैन यूटिलाइज? So definitely काफ़ी बड़ा ट्रेंड आ गया है where students are going abroad to the UK. उसके अंदर आपके पास एक दूसरा पुल एंड पुश फिगर आ जाता है. ठीक है. सो अनफॉर्चुनेटली पुश फिगर ये है कि हालात पाकिस्तान में इकोनॉमिकली आर नॉट द बेस्ट एंड चिल्ड्रन डोंट वांट टू स्टे हियर, दे डोंट वांट टू start off their professional journey over here. And the pull figure from the UK is that they've issued the post-study work visa. ठीक है. जिसके अंदर what they want is they want talented youngsters to come and study in their institutions and then settle and work in their companies. And if they're good enough, obviously go on towards settlement. So what I feel with that is it's a positive thing. Why not go abroad to study? Why not go abroad to gain experience and gain exposure? We live in a global community. You should not be restricted to your region, which is Pakistan. You've got opportunities out there, you should go for them. Now the UK at the moment is a very interesting one because they've gone through Brexit. So in which आपके जो European professionals हैं, a lot of them have ended up leaving the UK and going back to their European countries. ठीक है. Now that opens up a gap, and that gap is going to be filled because it's a huge economy. You've got a 2.2 trillion economy. Who is going to fill that? That is eventually going to be filled up with international professionals. Why not take advantage of those? You would be surprised if you look at statistics of Indian students going abroad or Chinese students going abroad. We are a very small fraction. And I think that is something that we really do need to work on and increase. And that's not just going there to settle. That is going there to gain experience and gain exposure, eventually come back or work there for a while, send back remittance, build your careers, bring back ideas, bring back opportunities for your own country. बिल्कुल ठीक है. और स्पेसिफिक मतलब आप अगर एजुकेशन की बात करें तो कोई है ऐसी मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं सुनता रहता हूँ टर्म्स, रसल ग्रुप है और इस तरह की रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कोई आर्ट्स के अंदर अच्छी हैं, तो कोई और आप गाइड करना चाहें स्पेसिफिकली? So basically you've got the Russell Group, which is the top 24 research based institutions in the UK. Now those are universities that are extremely well funded. So over the years, what we've done is we have worked with those universities जहाँ हमारे students जाना चाहते हैं. तो हमारे students are focused on top institutions: King's College London, Queen Mary, SOAS University of London, the University of Sussex, the University of Cardiff, University Arts London. The University of Glasgow, which is now an exceptional opportunity as well. So हमारा ये focus होता है to send the students there to institutions जहाँ they will get a lot of opportunities, where they'll be trained well and where they'll have the opportunity of solid employability after graduation. Interesting चीज़ ये about the UK is over the board they have opportunities within each and every professional field. Anything that you can think of. Okay. And there's certain universities that specialize in particular fields. Okay. So
फाइनेंस के लिए अगर आपने जाना है, you want to target London, you want to target capital cities, Cardiff जैसे. If you want to go for business, if you want to go for business, if you want to go for development studies, you want to target universities that are solid for those. University of Sussex is #1 in the world for development studies. So target those kind of institutions. If you're interested in politics, law, sociology, SOAS, University of London is an exceptional option to look for because they're very right-winged and they focus on students who want to develop themselves and they focus on these certain programs. So I think what you want to do is you want to focus on आपने किस career के लिए जाना है and according to that then target particular institutions. And एक और बड़ी मजेदार चीज है, ranking isn't everything. ठीक है. Okay, ranking is just the amount of funding that is provided to an institution for their research. Obviously उसकी वजह से आपकी facilities बेहतर होती हैं, आपकी academics बेहतर होते हैं, but that's not everything at the end of the day. Right. You want to look at universities and you want to look at stats that those universities have to offer. उनकी employability कैसी है? How is their student happiness index? Talk to students who've actually graduated from there or are studying there. कि while you're studying आपके पास क्या opportunities आती हैं? Because at the end of the day, it's expensive to study. And जो आप चाहते हैं कि you want to go there, study, while you're studying, work, gain experience, exposure, अपनी personal development करो. And at the same time, हर student एक particular city या एक particular university के साथ align नहीं करता. What you want is figure out कि आप कौन हो, आपके strengths क्या हैं, where will you be happy, and then according to that decide a city where you want to target. And I think that's very important when you're looking for it. तो इसका मतलब वो जो हम पढ़ते हैं बिजनेस में SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, तो मतलब इंडिविजुअली भी हमें स्टूडेंट लाइफ के अंदर अपना SWOT एनालिसिस करना चाहिए. I think definitely that's a very interesting तरीका है, the way you put it. करने चाहिए, but at the end of it, this is something that's continuous. Okay. So अपनी personal development के लिए you need to analyze yourself. And the best way to analyze yourself is experience and exposure. ठीक है. Multiple चीजें में अपना पैर डालो, see it, try it, see if you like it, and if you do, try and build on that. And then sit back, analyze yourself, see what your strengths are, फिर target करो अपने आप को. ठीक. And you asked me about students who don't have finances. मैं अभी ये पूछने लगा था कि ये this sounds perfect, मतलब उनके लिए जिनके पास finances हैं, they have the means to travel और सब चीज़ें. लेकिन आपको पता है कि most of the population पाकिस्तान में, मतलब अक्सर लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि ये यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं या यूनिवर्सिटीज़ ये स्कॉलरशिप्स हैं जो देती हैं. शेवनिंग है, कॉमनवेल्थ है, आई कैन नेम ओनली अ फ्यू. तो स्कूलिंग के लिहाज से उनका इशू होता है और दीगर इशू होते हैं. उनके लिए क्या कहेंगे आप? मतलब आई वांट कि आप उनको गाइड करें कि पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रोफाइल बिल्ड कैसे करते हैं और फिर यहाँ कैसे अप्रोच कर सकते हैं आप. So बड़ी एक interesting scholarship which is the Chevening scholarship that you've talked about. जी. Now that is for those students who want to come back and contribute to the country. And I think it is an exceptional opportunity. Now, if you're an undergraduate student, if you're in school and you do want to get that experience, you do want to get that exposure, सबसे पहले क्या करो, understand scholarship offer क्या करती है, and understand scholarship, what is Chevening looking for in youngsters. Once you figure that out, that is not someone who's going to go on and build his business. That's not someone who's going to go on and build his marketing firm. That is someone who's going to contribute to the country. That is someone who's going to contribute to society over here and bring back. Now, उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए you start building your exposure. You start building your career in Pakistan. You start working in particular fields that do give back. That can be anything. Climate change पर काम कर लो. You can work as a journalist. You can work with, you can work in schools, you can work on student development. And there's a number of fields that you can target, but the main focus is giving back to society over here. And they've got a requirement that you need to work for 3 years in Pakistan, get that experience, get that exposure, and then you can target those scholarships. So scholarships obviously are for a very, very few chunk of students and probably not the larger audience. जो आपकी लार्जर ऑडियंस है उस पर मैं ये सजेस्ट करूँगा,
पाकिस्तान में रहते हुए यू हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. दैट अपॉर्चुनिटी इज आप लोग रह रहे हैं एंड यू आर पेइंग इन रुपीज एंड यू कैन पोटेंशियली अर्न एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इस बात पे मैं वापस जाऊंगा जो मैंने पहले की थी कि हम एक ग्लोबल सोसाइटी में रहते हैं. ग्लोबल सोसाइटी का मतलब है कि दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स हैं एंड सिटिंग हेयर यू कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. First thing first, go online and find opportunities where you can work as a freelancer. Simple. There are a huge number of options. You can work as a graphic designer, you can work as a videographer, product development पर काम कर सकते हो, SEOs पर काम कर सकते हो, marketing पर काम कर सकते हो, anything. Just go through and you'll be surprised with the number of options available to you. उसके लिए क्या करो? You actually understand what is required within those skills. It's not rocket science. Work for it for 6 months, work on it for a year and develop those skills. Once you develop the basics of those skills, then actually take action on them. Go on these international websites and start working as a freelancer. And you'll realize the opportunities available. You'll realize what issues, that number one, what skills you lack. And start polishing up on those skills. Simple example, you want to go as a graphic designer. Now, you learn those skills as a graphic designer, improve on those. Work on it as a videographer, then improve on those. Work as, understand how to work on shoots, understand sound, and you put a whole package together. Present that. That's something that you can work on. These are just basic suggestions that I'm giving, but there's everything available online. And this is something that youngsters should be looking at who do not have the financial means. And take that one step at a time. ठीक है. एक देन अगर हम नीचे मतलब बिल्कुल बेसिक पे आ जाएं तो आपको पता है इस तरह के भी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, दोज हु डोंट इवन हैव एक्सेस टू लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स, और जिसकी बात कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? वो पाकिस्तान में कोई ऐसी मतलब कहाँ वो देखें कि जो उनको सपोर्ट कर सके? बड़ा रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है. अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं हैं तो आपको एक दिन में नहीं मिलने वाले, आपको एक महीने में नहीं मिलने वाले. इट इज़ समथिंग जिसके ऊपर तुमने काम करना है, जिसके ऊपर तुमने मेहनत करनी है, बट टारगेटेड मेहनत. ये नहीं कि जाके मजदूरी शुरू कर दी एंड बस यही चलता रहेगा, या किसी के लिए काम शुरू कर दिया, एक आपको सेट सैलरी मिल रही है एंड दैट इज़ द एंड ऑफ इट. ठीक है. अपने ऊपर काम करो. आपके पास पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टेफ्टा के वोकेशनल सेंटर्स हैं. एक दफ़ा ऑनलाइन जाओ या टेफ्टा के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाओ और देखो कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बेसिक होंगे. यू कैन कुक के तौर पर काम कर सकते हो, मैकेनिक्स के तौर पर काम कर सकते हो, फार्मर्स के तौर पर काम कर सकते हो, बुचर्स के तौर पर काम कर सकते हो. बट ये बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हारी अपनी पर्सनल स्किल्स होंगी एंड दीज आर थिंग्स जो रेवेन्यू तुम्हारी जेब में लेके आएंगे. एंड दीज आर थिंग्स दैट यू शुड बी लुकिंग एट एंड दीज आर थिंग्स दैट विल एक्चुअली टेक यू वन स्टेप अप. ठीक है. जब इन पर काम कर लिया, जब थोड़े से फाइनेंसेस इकट्ठी कर लिए, पहली चीज़ जिस पर इन्वेस्ट करो एक अच्छा लैपटॉप. वो अच्छा लैपटॉप एक दफ़ा तुमने पकड़ लिया ना, उसके थ्रू मल्टीपल स्किल्स तुम उठा सकते हो. दैट इज़ माई सजेशन फॉर पीपल जिनके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ एट द मोमेंट नहीं है. और दूसरा मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी यूथ में ये चीज़ें ट्राई करो. नॉट स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली. आई थिंक व्हेन यू आर यंग, you know, male, female, doesn't matter where you are, doesn't matter if you're in a city, doesn't matter if you're in a village, look for these opportunities and start step by step. At the same time, be very realistic. और दूसरा मेरी ये suggestion है कि जब काम करना शुरू हुआ है and you start earning revenue, don't spend that money. You need to save that money for a cause. That cause can be anything. अपना लैपटॉप लो, अपनी बिजनेस स्टार्ट करो. इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ कर सकते हो अगर तुम उसको स्पीड अप करना चाहते हो. यू कैन ऑलवेज गेट अ लोन. अकूवत की तरफ से लोन ले सकते हो टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. अकूवत की वजह से लोन ले सकते हो टू लेट्स से work in a particular, let's say if you want to buy certain material that you need for your mechanic shop. These are things that you should also avail. And ये सारे credit free loans होते हैं. ठीक है. थैंक यू. अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन. आपको पता है द करियर जो है हमारा वो भी एक स्टीरियोटिपिकल है, या इंजीनियर या डॉक्टर या फॉर दैट मैटर CSS. इस तरह की कुछ 5-6 फील्ड्स हैं जो करते हैं. लेकिन अगर आप बाहर देखें तो
लोग साउंड के अंदर कर रहे हैं, यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, हम बता भी नहीं, आर्ट्स के अंदर कर रहे हैं, पेंटिंग में, म्यूजिक में। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो स्टीरियोटिपिकल मैं कहूँ अगर इसको कैरियर जो एक बन चुके हैं, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? उसको ब्रेक करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको ब्रेक करना आई थिंक गोल्स एंड एस्पिरेशंस रखने ज़रूरी है। बिकॉज पाकिस्तान में basically you select a career with something that's going to pay you later on. जी. Now when you don't have those careers and those opportunities available in Pakistan, आप क्या करते हो? You play safe. I think इसको देखने के लिए you need to look beyond the country that you're sitting in and you need to see opportunities that are there globally. एक दफ़ा you understand कि globally क्या options हैं, क्या opportunities हैं, then your mind is open. फिर target whatever you are interested in and whatever you do well. अब उसके लिए भी बैठे बिठाए आप नहीं कह सकते कि यार मैंने आर्टिस्ट बनना है, बैठे बिठाए आप नहीं बता सकते कि मैंने ड्रामा में जाना है या मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने मार्केटिंग में जाना है या एनीथिंग. You need to get experience and you need to get exposure. Try multiple things. When you are young, try multiple things. Go and do internships. Go and work for free. Go work for charity organizations. Get your friends together and start a small business. Try and figure out कि किस चीज़ में invest करना है. You need to put your foot in different places to actually figure out कि आपकी क्या strengths हैं. And putting your foot का ये मतलब नहीं है कि मैंने 1-2 दिन काम कर दिया एक चीज़ में मुझे अच्छी नहीं लगी. थोड़ा सा commit करो चीज़ों को. मतलब महीना 2 महीने एक समर दो उसको. See if you're good at it. ठीक है, try and be good at it. Try and push yourself and then align it with different things. So let's say you're good at talking to people, right? Figure out, okay, how can I use this? You know, can I go into law? Can I go into teaching? Can I go into media? And then try all of those fields. Spend time in them, invest in those fields. Then once you've figured that out, then move forward. तो दूसरा मैं ये चाहूँगा कि enjoy it. क्योंकि if you're good at anything globally, you will earn from that. And अगर तुम वो चीज़ enjoy कर रहे हो, then it just becomes fun at the same time. And you keep on consistently trying to grow in that. तो जो by the sound of it जिस तरह आप बता रहे हैं, I think कि मैं भी जो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ या अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी हम लोग फिर एक डिफरेंट तरीके से गुजारें स्टूडेंट लाइफ को. एज इन वी हैव नॉट गिवन अप आवर सेल्फ एज इन के मतलब हम बस हालात के साथ साथ चली जा रहे हैं. तो आप जो बता रहे हैं जो करना चाहिए उसमें तो आपको डेलिब्रेटली डेली सोचने की ज़रूरत है, डेली प्लान करने की ज़रूरत है. अपना जो आप स्वॉट एनालिसिस जैसे कहते हैं वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे करने की ज़रूरत है. आई मीन इट, यू नीड टू बिकम वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपने आगे कहाँ जाना है और ऑटोमेटिकली बस डिग्री करके आपको जॉब नहीं मिलेगी. तो ये मैंने एक अच्छा की टेक अवे अगर मैं कहूँ तो ये लिया कि आपको डेलिब्रेट करने की जरूरत है ऑलमोस्ट ऑन एवरी डेली बेसिस सक्सेसफुल होने के लिए. I mean, why not? At the end of the day, it's your life. And if you do something well and you focus on it and you analyze yourself and you take it one step at a time, at the end you will do well at it, you will enjoy it, you will grow at it. बिल्कुल. And it will open up other opportunities as well. बिल्कुल. So I think फोकस इस चीज़ पर करना चाहिए और डेफिनेटली करना चाहिए. ठीक है. तो मेरा फाइनल क्वेश्चन, अगर कोई स्टूडेंट अभी सुन रहे हैं और नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप दैट ही और शी और दे शुड टेक? पहला स्टेप क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल स्टेप? कहाँ से शुरू करें? वो उनकी बाहर जाके पढ़ना है, उन्होंने उनकी इंस्पिरेशन है, अभी वो डिग्री कर रहे हैं. अक्सर ऐसा भी होता है कि वो लेट हो जाते हैं, उन्होंने कुछ काम जो डिग्री करते हुए करने चाहिए थे नहीं किए, तो क्या करना चाहिए उनको? आई थिंक अगर आप यूनिवर्सिटी में अभी बैठे हुए हैं और अगर आप क्लियर हैं ऑन व्हाट यू वांट टू डू, ब्रिलियंट. उस पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अंडरस्टैंड उस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं एट द हाईएस्ट लेवल. ठीक है. सो नॉट लेट्स से स्टार्टिंग इन पाकिस्तान कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएट करके नेस्ले में काम करना है या मैंने यहाँ से ग्रेजुएट करके यूनिलीवर में काम करना है, विच आर एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटीज़, बट दैट शुडंट बी that shouldn't be the first thing that comes to your mind. I think जो सबसे पहली चीज़ है, if you know your field of interest, look at the top opportunities available and then उसकी तरफ काम करना शुरू करो. Simple example, let's say अगर आपको marketing का शौक है, right?
नाउ मार्केटिंग में पाकिस्तान में ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर बहुत काम किया जाता है, जिसके अंदर आपके रेडियो एड्स आ जाते हैं, आपके टेलीविजन एड्स आ जाते हैं. अब पेंडेमिक की वजह से फोकस आ गया है ऑन social media, on websites. Now, there is a huge amount of opportunities in immersive technologies, in artificial intelligence. And this is work that is being done globally. And I think uske upar jaake focus karo and see how can you learn those particular skills. वो बच्चे who are in university right now, they're not clear कि वो क्या करना चाहते हैं. तो मेरी ये suggestion है कि talk to your peers, talk to your seniors, talk to your academics, and have discussions with them. And ask them about your strengths. Talk to them about your aspirations. And once you've done that, you'll get a slight clear idea to where you stand. Talk to a career counselor and see where you think your strengths lie. और हर अपनी steps को assess भी करो. Okay, let's say that you're very competitive. ठीक है, how can you use that? You know, what can that lead to you? What kind of things should you be targeting towards? दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि try while you're in school जितना experiment कर सकते हो ना, और while you're in university जितना experiment कर सकते हो ना, करो. और जितना compete कर सकते हो ना, do it for the fun of it. So compete का मतलब ये है कि student elections में part लो. compete का ये मतलब है कि XYZ chess tournament वगैरह उसके अंदर part लो. compete का ये मतलब है कि if there is a competition going on, a tennis competition or a squash competition next year and you've never played in your life, start working towards that. Keep on challenging yourself. I think जो सबसे बड़ा issue मुझे नजर आ रहा है कि students stagnant हो जाते हैं and they start going with the flow instead of using the institution for the strength that it is. Because institutions, even in Pakistan, do give you those options and do give you those opportunities to express yourself and develop your character. दूसरा मैं ये suggest करूँगा कि positive तरीके से network करना सीखो. Network करना, बिल्कुल. और network का उसको एक negative तरीके से ना लो. Positive तरीका ये है कि आपके जो peers हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनके साथ connect करो. उनके साथ connected रहो. जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके academics हैं, connect with them. When you talk to them about the careers that are available. उनके through अपने आप को careers के through link करो. बिल्कुल ठीक. So whenever let's say you're in a room, wherever that may be, if you find someone interesting, I think talk to them. Get their perspective as well. Get their exposure as well. That's my suggestion for youngsters. Brilliant. Thank you so much, Hassan bhai. It was very informative. Actually, मैंने खुद भी बड़ा सीखा और I hope जो students देख रहे होंगे उन्होंने भी काफ़ी सीखा होगा. Once again, thank you so much for your time. Thank you for inviting me. Thank you.